and I'm also the public relations head at ECEL KIET. I've been a part of this team since my first year, and I've learned a lot here. And I'm very proud to be the host of this event, an event of such stature today. Uh, we have a lot of luminaries in the audience, so I just like to take 1 minute or so to mention all the people who have made this event possible. And first things first, I would like to ask all the panelists that are present here with us today that if you guys have to leave the meeting in the middle of the conversation for any reason, please do not choose the option that says end meeting for all, because if in case you do so, the meeting will close for everyone, Okay. right? So you can see you must be seeing a red cross that says leave meeting. So if in case you have to leave due to any unforeseen circumstance, please do not end the meeting for everyone, okay? Because that will close the conversation for everyone. Okay, so that is out of our way. The next thing that I wanted to mention is I would like to take this opportunity to thank all the sponsors that have made this event possible, especially in this COVID situation, wherein it's very difficult to get assistance of any kind, let alone monetary assistance from any company or any organization, right? So our title sponsor for this year is Indigo Airlines and Capgemini. So we would like to thank them. And we are also in an association with Innovaccer, and we're very glad to have Sachin sir from Innovaccer here present with us today. Meaty Startup Hub, Institutions Innovation Council, Geeks. We have Mrs. Sandeep from Geeks here as well. Progate, Baudik Ventures, Fun to Do Labs, and many more. So yeah, I'd like to thank all of them for supporting our ventures and supporting our initiative and believing in us and giving us an opportunity to present. So without wasting any time, I'll just move on to the proceedings of the day. So first of all, I'd like to give an introduction about the people who are here with us today to all of our participants, so that you guys can understand what kind of background they're from, right? And the questions then will make sense to you. So first, I'll start with Mr. Saurabh Jain. He's the founder of Fontudu Labs. It's an edtech startup, has a very bright future, and it has also pioneered a new space in edtech called transmedia education. That is something which is very commendable. He's also an ex vice president at Paytm, so that is something to be very proud of as far as achievements go. And he has also founded a social initiative called startuplearn.org. He's also a member at a national expert advisory committee on innovation, incubation, and technology entrepreneurship that falls under the Department of Science and Technology, Government of India. And he's also on NASSCOM's product council. We have quite an illustrious list of achievements. So we welcome you, sir. The second one that we have in our list is Mr. Sandeep Jain. I'm sorry. He's the founder of Geeksforgeeks, and we are from an engineering college, so I think most of us know how big of a lifesaver Geeksforgeeks is for us, right? And especially me, I can also relate because I'm from IT as well, so I understand that Geeksforgeeks is a lifesaver. So to have such a person in our meeting today is a privilege, and we welcome you, sir. He was also an associate professor at JIIT Noida. So, and he is a BTech graduate from AKTU itself, which is the university that we also are from. So it is basically a kind of motivational thing for us as well, that we are students of AKTU and someone from AKTU has made it this big in life, right? And we have another person like that. I'll get to that later. Okay. So we welcome you, sir. Next, we have Sachin Saxena, sir. He is the senior director of marketing and one of the founding team members of Innovaccer, which last month hit the status of a unicorn startup. So we would like to welcome him in the conversation. And one fun fact, actually two fun facts about Sachin sir are that first, he's from our college, not our university. He's from our college. And second, he is also one of the founding team members of Team ECEL, which is organizing this event today. So to have him present here with us today is a very big achievement, and I'm very glad and I'm very thankful to him for joining. One more thing that I would like to mention is that we had one more speaker scheduled for this event today. His name is Mr. Saurabh, but due to some personal reasons, he couldn't make it in the end. So that is something that I would like to get out of the way. So if any participant is wondering why Mr. Saurabh is not here, so I would like to say that he was going to join, but due to some reasons, he has not been able to make it. So before we begin, I would like to ask the panelists, can you hear me?
Yes, we can hear you. So am I clear? And am I So audible? Harshit, yes, we can hear you. You can hear us? Yeah, yes, I can hear you, sir. Okay. What about you, Mr. What about you, Mr. Sandeep? Can you hear Yeah, me? I can hear you. I can hear you. Okay, perfect, perfect. So we'll just begin now. Okay. So basically, this conversation is going to go in four main aspects that I'm going to cover here with you guys. The first one is starting a business. How do you start a business? The second one is growing the business that you have started. Right. The third one is the key challenges that you face when you scale up your startup. When you pass the growth phase and you're trying to scale it up. And this fourth one is the one which I'll be disclosing if we have time in the end. Okay. It's a very fun type of question. So to keep things, a mix of fun and knowledge, I added this question, but I'll ask it in the end if we have time and if time permits. So let's begin. So first of all, I'd like to ask all of you to introduce yourselves to the audience because there must be something that I missed. So let's begin with Mr. Saurabh Jain. So, good evening, everyone. I think the introduction was right. Broadly, what I can say is that I have been an entrepreneur whole of my life. Besides the 2.5 years I was VP at Paytm, so it was an interesting thing that, like, as an entrepreneur, I had a lot of questions in my mind. I read more than 200 books to answer them, and one day, fortunately, Vijay called me and he said ki, I want you to join the company. I was a bit reluctant initially, but after a few months working with him in a capacity as consultant, I joined the company. And basically, I had this in mind. My father had died when I was very young, so I could not go to America, or like everybody wants to go to Harvard, Stanford, or even my mother said IIT के entrance में time मत waste कर, do CA, because my father was CA and it was I felt it was easier. But what I learned in Paytm, I would say Harvard, IIT, and Stanford सब combine करके भी I would say I learned more in Paytm than all these places I could have learned. So I want to share that. I think that is my introduction. I think और सब कुछ बेकार है. I just want to share whatever I learned, because I understand I wasted 15 years of my life because I was not knowing the best practices. Fortunately for me, from 2015 onwards, when I started reading all these books, and I had this pleasure of working with Vijay also, and I learned a lot of things from Vijay, from senior people in Paytm like Deepak about, who are very good in product management. So I would like to share all these things as soon as the hosts ask me these specific questions. Thank you so much, sir. And two things that I would like to mention to the audience. First, when Mr. Saurabh Jain mentions Vijay, he's mentioning to Vijay Shekhar Sharma, who is the founder and CEO of Paytm, right? So, and now next thing, we'll move on to Mr. Sachin. So, can you please give us an introduction to brief? Hi, Harshit. First of all, definitely thank you for inviting me on this platform. And definitely, this is very close to my heart. It's all started from here. So I definitely like don't want to start with Innovaccer. I want to start my introduction with eSelf. So I founded like Kite Entrepreneurship Cell a long back, like 7 years back, with some vision, and then joined Innovaccer in 2015, like again in a garage office late 2014, and pretty much grew up the company from a $0 million to right now we are around at $1.3 billion valuation in 5 years of the time period. It's more or less, I can say when it's a guide entrepreneurship cell meeting, a lot of time we can see a lot of people like going to study for IIMs or IIT. I think he already talked about it. Like in terms of Harvard, it's more or less what kind of experience you are taking at anywhere. It is like more and more important. And yeah, so right now I'm leading like the entire marketing vertical globally at Innovaccer. I started the healthcare business for Innovaccer from zero. No one really know about the healthcare at that time, including our founders and the entire founding team. And then the entire company pivoted to the healthcare company after a year. And then I again started marketing without any prior experience of marketing. Right now, we have like around more than 200 marketers around the globe, including US and India, and leading like the entire vertical.
here at Innovaccer. Thank you. Thank you so much, sir. Next, I'd like to ask Mr. Sandeep Jain to please introduce himself to the audience. Hi everyone. First of all, many thanks to all the organizers for organizing this event in such tough times. And I also feel great to be a part of this panel, and I am sure that I'm going to learn from other speakers here. So, talking about myself, guys, you all must be using Geeks for Geeks. I'm kind of sure because it has become part of engineering curriculum now. Every student uses it. Geeks for Geeks started as a part-time activity. I was working with D. Shaw and Company after my IIT Roorkee MTech, and I used to write articles on weekends, Saturday, Sundays, but it became popular with time. So I left my D. Shaw job and joined GIT as an assistant professor. Worked there for 5.5 years, and I joined this teaching job not only because I wanted to get time for Geeks for Geeks, I also enjoy teaching. In fact, even if we have a company of 200 people, I'm CEO of that company, I still do teach. I still follow my passion of teaching. So I joined GIT, worked there for 5.5 years. And since it was a teaching job, I used to get a lot of time after my 9 to 5 job. So Geek Stories grew with time, traffic grew with time. And then I started doing it full time. I started with 3 interns. They were my students. And we have been growing since then. Wonderful, wonderful. And we are very proud to announce that two of these three people that we have today are from our university. Often looked down upon when it compares to IITs and NITs, but it's a testament to the fact that in the end, it's your knowledge that matters, not your college, right? So thank you everyone for giving us your introduction. Now I'll move on to the first question and the first part of this discussion. So the first question that I have, the first topic that we're going to cover is starting a business. Okay. So my question to all of you is, how did you start your business? How did you get the idea for your business venture? And what were the problems that you faced in the execution of your idea? So I'd like Mr. Sachin, please start with this question, answer this question first. So, like Innovaccer, we started with like big data actually like is still the problem and even like the big problem around 7 years back. And we know like if we really want to do analytics, we really want like structured data. Like today, even if I talk about in India, you are going to bank, you know what transaction you did like 3 years back or what transaction you did to 2 years back. But if you go to hospital, you don't know what medicine doctor prescribed you like 3 years back or 1 year back or 6 months back. There is no record, right? Even if you are sitting anywhere like the entire world, actually see your data, your history. So healthcare data is like one of the major problem in India at this point in time, and the same problem we actually observed like 7 years back, a major problem in US. Like a lot of data is very unstructured, and how basically we can make it more structured, and how basically we can operationalize data and perform the analytics on the top of it. So I am proud to say, it's not about what business we are doing or like we become the unicorn, but the proud thing about the innovator, we save actually millions of lives in US because of that data, that analytics what we perform. So I don't know, like if I answer your question or not, and if there is anything add on to this. But yeah, Innovaccer is started to all like how basically we can solve the data related challenge, how basically we can make data more structured, more analytics we can perform on the top of it. Yeah, thank you, Sachin sir, for answering the question. Now I'd like to move on to the next person, which is Mr. Saurabh Jain. So can we please hear your views on this? I think he's been muted by mistake. Can you please unmute him? Someone from our team. We're so sorry for this. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay. Can you just repeat the question once again? Yeah, sure, sure. No worries. So the question is that how did you start your business? But since in your context you started your business 1 to 2 labs, but you've also worked at Paytm, you can mix that knowledge also in this answer. So see, I had this idea a few years ago, just before joining Paytm, ki, if see, I had kids, and obviously most kids don't want to study that much. They want to see Doraemon, etc.
एंड माय वाइफ यूज्ड टू से कि ये सब मत देखो, पढ़ाई करो. एंड आई यूज्ड टू से टू हर कि नहीं, इससे भी फायदा होता है. बट शी सेड नहीं, पढ़ाई तो होती नहीं इससे, डोरेमोन से. तो आई हैड अ वेरी सिंपल आइडिया कि क्या ऐसा डोरेमोन नहीं बना सकते जिससे पढ़ाई हो जाए बच्चों की. तो आई रिसर्च ऑन दिस टॉपिक. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमीडिया. मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ी. आई वेंट टू अमेरिका. मैं सोचा, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी 2010 में. आई स्टार्टेड इन माई फर्स्ट स्टार्टअप इन 2003, बट आई रियलाइज आफ्टर सर्टन टाइम कि टेक्नोलॉजी से प्यार मत करो. टेक्नोलॉजी इज लाइक अ गर्लफ्रेंड, चेंज हो जाएगी. बट 7 जन्मों का बंधन अगर चाहिए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम चूज करो जो चेंज ही नहीं होती. सो लाइक जेफ बेजोस का कहना है कि अमेजन में 3 बेसिक फंडामेंटल एंकर्स हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे. वो क्या है? पीपल वांट मोर चॉइस, पीपल वांट लेस कॉस्टली स्टफ, एंड तीसरा पीपल वांट फास्टर डिलीवरी. तो आप ये कभी देखो, 2000 में भी लोगों को यही चाहिए था, 2050 में भी यही चाहिए. कभी कोई यही नहीं कहेगा आज से 25 साल बाद भी मुझे महंगी चीज़ चाहिए, मुझे लेट चाहिए डिलीवरी, या मुझे कम चॉइस चाहिए. तो ही मेड दी कंपनी ऑन दैट प्रेमिस. तो मेरे को ये समझ आया बहुत लेट, बट अब मैं ढूंढता रहा कुछ नया बनाएंगे, क्योंकि इंटरनेट वॉज समथिंग अबाउट न्यू. कुछ भी सोचते थे उससे पहले कुछ ना कुछ मिल जाता था. तो मेरे को ये सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते आई डिड मल्टीपल थिंग्स इन पैरेलल. बट 2000 से 2016 एंड आ गया. एंड आई हैड लर्न प्रोग्रामिंग इन क्लास 7th 8th मैरियो बनाने के लिए. तो मैं एक बार गेम बना के लेके गया. एप्पल से मीटिंग थी मेरी सैन फ्रांसिस्को में. दे सेड गेम तो बड़ा अच्छा है पर ये मैरियो की कॉपी लग रहा है. तो मैं बड़ा खुश भी था, दुखी भी था. दुखी इसलिए था, सैन फ्रांसिस्को में एप्पल से मीटिंग इज नॉट ईजी, तो वो सारा वेस्ट हो गया. बट खुश इसलिए था कि आज एप्पल वालों को मेरा गेम मैरियो जैसा लग रहा है. तो 25 साल लगे मैरियो बनाने में, पर बंद हो गया. तो फाइनली आई टुक दैट इनपुट एंड दे सेड आप अपने कैरेक्टर्स बनाओ. तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग आवर ओन कैरेक्टर्स. एंड वो जो साथ में वो थीम था कि डोरेमोन ऐसा बनाना है जो पढ़ाई वाला है, तो हमने अपने कैरेक्टर्स को पढ़ाई के लिए बनाना शुरू किया. अभी वो बना ही रहे थे. इन बिटवीन क्या होता है कि विजय का एक दिन मैसेज आ गया. तो सबसे पहले मैं इंटरेस्टिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स हैं तो जनरली सोच पैसे वैसे की ज़्यादा रहती है, मैंने देखा इस एज ग्रुप में. तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ. विजय ने ना मेरे को फॉलो करना शुरू किया ट्विटर पे. तो मैंने अपनी वाइफ को बताया. मैंने कहा विजय मुझे ट्विटर पे फॉलो करने लग गया. ये होगा 2017 में, अराउंड सितंबर के आसपास की बात. तो माई वाइफ सेड विजय कौन? मैंने कहा विजय शेखर शर्मा, दा विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर, बिलियनियर, ये वो सब. एंड शी सेड कोई नहीं, बिलियनियर तो हैं बट उनके फॉलो करने से तुम्हें क्या फायदा? तो वो कुछ पैसे थोड़ी ना मिल जाएंगे फॉलो करने से. तो अब वो पैसे कैसे मिलते हैं मैं बताता हूँ. क्या हुआ, एक दिन मैंने एक कॉलेज के इवेंट में मैं गया. मैंने ट्वीट किया एंड ही वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू दैट. एंड ही हैड अर्लियर आल्सो आस्क्ड मी कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो 2012 में, बट आई डिड नॉट ज्वाइन. तो विजय ने फोटो देखी एंड विजय सेड आके मिलो मेरे से. अब दा विजय शेखर शर्मा आपको पर्सनली बुला रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जाओगे. मैं मिला जाके. विजय सेड यार तेरे आइडिया बड़े अच्छे लग रहे हैं. 1 1.5 घंटा बात होती रही. विजय ने लंच वंच कराया. तो अब विजय शेखर शर्मा आपको बुला के लंच करा रहे हैं. मतलब मैं विजय को जानता था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल पहली बार मिला था, बट अब दा विजय शेखर शर्मा बन चुके थे. वो पहले जब मैं उनसे मिलता था वो विजय शेखर शर्मा थे. डिफरेंस था ना दोनों में. तो उन्होंने पूरा लंच कराया. आई वॉज रिसर्चिंग ऑन एजुकेशन टेक्नोलॉजी. तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा. मैंने कहा आप इतने बड़े आदमी बन गए, आपने पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे थे आप, या जो जनरल हम धीरू भाई वगैरह का सुनते हैं कि 10वीं पास थे और क्योंकि वो उनको मार्केट वगैरह की नॉलेज अच्छी थी, एंटरप्रेन्योर बन गए? तो ही सेड नहीं, मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में. सो आपको जान के शायद हैरानी भी होगी, मैं थोड़ा हट रहा हूँ टॉपिक से, बट विजय शेखर शर्मा ज्वाइन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिफोर जनरल एज. जब आप ज्वाइन करते हो ना 12th के बाद, विजय को 2 डबल प्रमोशन मिली हुई थी. तो विजय 2 3 साल पहले ही इंजीनियर बनने चले गए एवरेज आदमी की एज से. एंड तो ही सेड, मैंने कहा ये तो बढ़िया एजुकेशन. तो आई रियलाइज, मैंने कहा विजय के साथ काम करके डबल फायदा है. एक तो स्टार्टअप्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, दूसरा मेरे को जो एजुकेशन की रिसर्च करनी है वो विजय बीइंग दी रोल मॉडल में बहुत क्यूरियस था कि विजय कैसे पढ़ाई करते थे और ये सब चीज़ें. तो विजय ने बताया एंड ही लाइक्ड. ही सेड ठीक है ज्वाइन करो. तो आई ज्वाइन फुल टाइम, बट आई डिड नॉट ज्वाइन एज एन एम्प्लॉय, बिकॉज मेरे को ये था कि 2 3 महीने बाद शायद मेरा आइडिया चेंज हो जाए. या आई थिंक सचिन वुड ऑल्सो नो, जो जितने यूनिकॉर्न्स होते हैं इनमें ना आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं. तो मुझे एक ये भी शक था. मैंने कहा 1 2 महीने के बाद विजय का आइडिया चेंज हो गया तो मैं तो ना इधर करूँगा ना उधर करूँगा. तो बट आई ज्वाइंड, एवरीथिंग वेंट वेरी वेल. एंड विजय वन डे सेड यार तू फुल टाइम क्यों नहीं ज्वाइन करता, तेरे को वीपी बनाऊंगा, तेरे को शेयर्स भी दूंगा, सब कुछ करूंगा. तो आई रियलाइज यार अब फन टू डू लैब छोड़नी पड़ेगी. तो मैंने विजय से कहा मैं फन टू डू लैब छोड़ना नहीं चाहता. बोले थोड़ी बहुत चलाता रही हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. बट आई रियलाइज भाई अब वीपी बन रहे हो तो आप पैरेलल तो चलाओगे नहीं कंपनी. तो आई कन्वर्टेड दिस फन टू डू लैब्स इनटू अ एनजीओ. हमने कभी रजिस्टर एनजीओ नहीं कराई, बिकॉज यू ऑल नो इंडिया में इतने सारे लीगल प्रोसेस होते हैं. आई सेड प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो कंपनी एनजीओ बन गई.
तो मेरे ये दिमाग में यही था, एंड अ फ्यू पीपल इन माय कंपनी वांटेड टू स्टे, दे सेड सर इतने साल हो गए हम जाना नहीं चाहते। मैं चलो ठीक है, एनजीओ बना के चलाते रहो, तुम भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ नया फेज। अब 2-2.5 साल ये होता रहा, बट एक तो खैर ऑब्वियसली कभी कहीं जॉब करी नहीं थी, तो एक दिमाग में रहा यार कभी भी दोबारा ना एक बार अपनी कंपनी खोलूंगा जरूर, क्योंकि ज्ञान तो अब है। अब बिना ज्ञान के आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसे पड़े थे, अब आप अर्जुन बन गए, तो कृष्ण आपके साथ हो चुके। मैं काफी बार विजय शेखर शर्मा को कृष्ण की तरह अपनी लाइफ में रेफर करता हूँ। तो मैंने कहा अब ज्ञान आ गया है, तो एक तो क्या है कि वो महाभारत की इच्छा इसलिए होने लगी कि ज्ञान आ गया है तो अब जीतूंगा जाके। दूसरा, आई ऑल्सो रियलाइज द फैक्ट, जब जैसे ये कोरोना आया और 1 साल से जैसे घर में रहा, मैंने अपने बच्चों को और देखा, रोज शाम को सुबह बच्चों के साथ मैं डोरेमोन देखता, तो जब भी मैं डोरेमोन देखता ना, तो मेरे दिमाग में आता कि यार काश मैं ये आइडिया करता। अब उसमें सिर्फ एक ही चैलेंज आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी सैलरी, एंड सी 7 फिगर्स की जो सैलरी होती है वो छोड़ के, इट्स नॉट ईजी। आज एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर होना फिर भी थोड़ा इसलिए आसान होता है, आप यही कहोगे ना कमाई नहीं है, बट हमारे साथ दूसरा था, कमाई तो होगी नहीं एंटरप्रेन्योर बन के कुछ महीने, बट वो जो इतने सारे पैसे आ रहे हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे। अब वो अपने आप में था, और दा विजय शेखर शर्मा को छोड़ के आप अपनी एक स्टार्टअप खोल रहे हो, वो भी एक अपने आप में था। तो मैंने एक फाइनल चीज जो दिमाग में लाया, तो रामायण महाभारत पिछले साल बहुत देखी थी, तो मैंने एक मन में सोचा, मैंने कृष्ण जी क्या कहते हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो मेरे को तो फल मिला हुआ था, मैंने फल छोड़ के सोचा कि कर्म करना है। एंड उसका रीजन सिर्फ एक ही था। मैं एक चीज, थोड़ा टाइम लग रहा है बट मैं एक चीज बताऊंगा, कि मैंने एक इकिगाई बुक पढ़ी थी, उसमें एक बड़ा क्लियर है कि डू व्हाट यू लव, डू व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, डू व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, एंड डू व्हाट यू आर गुड एट। ये चारों चीजें पेटीएम में नहीं जुड़ रही थी, पर ये चारों चीजें फन टू डू लाइफ में जुड़ रही थी। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ, मैंने कहा देखो, जिस दिन मैं रिजाइन कर रहा था ना 31 दिसंबर 2020 को, तो मैं सिर्फ इसलिए रिजाइन सोच के गया, मैंने कहा कृष्ण जी पे विश्वास रख रहा हूँ, कर्म करके देखता हूँ शायद फल मिल जाए। अब मजा क्या आया, व्हेन आई रिजाइन, 1-2 महीने तो शांति से होता रहा, चलो ठीक है। द डे आई, मतलब जो मेरा लास्ट डे था, दैट डे somehow some मीडिया पर्सन कॉन्टेक्टेड मी, ही सेड सर आप रिजाइन कर रहे हो, हम कवरेज करना चाहते हैं, आप क्या करोगे आगे। तो मैंने उनको फन टू डू लाइफ के बारे में बताया, दे कवर्ड मी इन शॉर्ट्स, और इन सब ने हमें कवर किया। ऑल बिग वीसीज लाइक सिकोआ और ये एलिवेशन कैपिटल, ये सब मुझे फोन करने लगे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। एंड व्हाट आई रियलाइज वाज, यार कर्म की सोच के, तो कर्म के वजह से रिजाइन किया था, पर अब फल की डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो मैंने तो एक ही चीज हमेशा निष्कर्ष निकाला लाइफ में, कि डू व्हाट यू एंजॉय, एंड एक दिन भगवान आपका साथ देता है। आई थिंक दैट इज हैपनिंग विद मी। Thank you so much, Mr. Saurabh, for such a detailed answer. It very well explains my question. I think it encompasses everything from your journey in your company, making your own venture. And the thing that I would like to point out to everyone, which I found the most fruitful from this answer, is that you need to keep money aside when it comes to factoring your future, especially when it comes to being an entrepreneur. You have to take risks. That is what an entrepreneur is. That is what he does. Thank you, sir, for such an answer. Now, next, I'd like to ask Mr. Sandeep Jain to please answer the same question. So, talking about how did I start, guys, I was in a tier 3 engineering college. तो यूपीटीयू के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर जो आपका केआईटी तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर कंपनीज आते हैं। आई वॉज इन ए कॉलेज जहाँ पर एक भी कंपनी नहीं आती थी हमारे टाइम पे। देर वॉज नो प्लेसमेंट फॉर अस, देर वॉज 0% प्लेसमेंट। And then I had no other choice. I went to IIT Roorkee, and when I was in BTech, I did not even know like कि off campus अगर try करना है तो कैसे करना है, और companies अगर कोई आते भी हैं तो उनके क्या expectations होंगे। So I went to IIT Roorkee for MTech. I did MTech from there, and when I was in IIT Roorkee, the placement was more than 100%. Companies like Google, Amazon, they all used to come at that time, and I got placed in D Show and Company. But I saw a problem in IIT Roorkee also. IIT Roorkee में भी क्या था कि कंपनीज आते तो थे, पर हमें पता नहीं होता था कि इन कंपनीज के हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितने राउंड्स होने वाले हैं इन कंपनीज में, वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे। I remember my D Show placement day. When the company D Show was about to come, I called my friends in other IITs कि यार तुम्हारे यहाँ D Show आई थी, कितने क्वेश्चन पूछे, कितने राउंड्स हुए थे, क्या से पूछते, कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। So there was no platform for these things. There was no platform to prepare for these things. So that is why the idea of Geeksforgeeks came in. In engineering, we study lots of subjects. I remember my engineering days. हमें वो मशीन से लेके पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं फर्स्ट ईयर से, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट।
And when it comes to getting a job, the most important thing is problem solving approach, and that's where we have gap between our academia and the employability thing, the software job things. So that's the gap. Geeks for Geeks. That's the idea to fill the gap, right? We wanted to fill that gap between academia and this requirements of this company, and that's why we started Geeks for Geeks. So, as you all know, we provide content for students to prepare for these companies. There was no platform before Geeksforgeeks. Once we started, there were many copycat companies after 4 or 5 years, but when we started, there was no platform. In fact, I remember in engineering days, there was no way I could search for any interview question and read the quality content. So that was the idea. Geeksway started with this idea to fill this gap, and after 4 years of journey, we started courses as well. Because Geeksway का जो main business idea है वो है कि हम सारा content students से लिखवाते हैं. आपके जैसे students लिखते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज के students होते हैं. They write the content for us. We have a review team that publishes that content, and we put it on our site after it is reviewed, and we pay to every published articles to the author, and we make money because the content is consumed by people across the world. We put ads on it, and we started courses as well around that content 2 years back. Thank you so much, Mr. Sandeep. And one thing that I'd like to add is that as an IT student in an engineering college, Geeks for Geeks has saved me a lot of time. So I would like to personally take this opportunity to thank you for creating such a platform that is still helping students even after a decade of or so since its inception. And thank you for the answer. So this basically concludes the first part that we were going to have out of the three plus one. That is the fun question. So the next question, the next part that is going to be covered in this group discussion is growing a business. Now we've covered the starting part phase of the business. Now we'll move on to growing the business. So the question that I have for all of you is, I'll give you a scenario. Okay. Generally, for a successful company, the definition of growth. That is to referring to increasing the revenue as a result of being in business and eliminating your competitors in some cases as well, right? But the biggest problem, especially in the Indian subcontinent, for budding entrepreneurs that are trying to achieve this feat, is that they lack resources, and even more so, they lack guidance when compared to Western society, especially the US and UK, the whole European Union, in fact, right? They have a lot of resources in place to help these students and to help these budding entrepreneurs, and they really, are very good at tapping the potential of people that they think are going to add value to society. But in India, these people end up doing, 9 to 5 jobs. Many reasons are there that are factoring in. Family pressure might be one of them. Financial stability might be one of them, and even mental health. Even mental health can be one of them. So I would like to ask all of you this question: that how do you grow your business once you've started your business? What kind of vision you must have in order to continue a sustainable growth that can attract investors, keep your employees happy, everything, right, from the beginning to the end? And I'd like Mr. Saurabh to start this question. Saurabh Jain. So I can share you. मैंने एक concept बनाया है. I have started a blog called startuplearn.org. तो उसमें मैंने एक concept पे blog लिखा. So this is a very new concept but very clear है कि आप जब भी startup शुरू करो, when you see a value mountain. तो वैल्यू माउंटेन इज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि आपको अगर एक खजाना दिखाई देना शुरू कर दे जो आप ही को दिख रहा है, औरों को नहीं दिख रहा, और वो खजाना माउंटेन पे होना चाहिए, सड़क पे नहीं पड़ा होना चाहिए. उसका रीजन ये है कि अगर वो सड़क पे पड़ा होगा तो आपसे पहले कोई और पहुंच जाएगा उस पर अगर एक दूर माउंटेन पे आपको एक खजाना, जैसे आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, तो उसमें बाहुबली 1 में वो एक माउंटेन पे चढ़ना चाहते हैं कि उनको लगता है माउंटेन के ऊपर क्या है. तो ऐसे एक माउंटेन है और आपको दिख रहा है खजाना और आपके कंपेटिटर्स को या आपके आसपास वालों को नहीं दिख रहा. तो जैसे मेरे केस में आप कार्टून कैरेक्टर से पढ़ाई करा सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दिखाई देता. जनरली लोगों के हिसाब से पढ़ाई का क्या मतलब होता है कि आप पढ़ाई टीचर से कराओगे या बैजूस वाले मॉडल से कराओगे. वो पढ़ाई आप बच्चे को एंटरटेनमेंट से कराओगे, वो भी थोड़ा बहुत होता है, बट एग्जैक्टली किसी कार्टून फिल्म के थ्रू या किसी गेम के कैरेक्टर के थ्रू पढ़ाओगे वो नहीं होता. तो आई स्टार्टेड सीइंग दैट. तो सबसे पहले तो वो बिल्कुल वो एम बड़ा क्लियर है कि मुझे ये वैल्यू माउंटेन जीतना है. अगर आप ये वैल्यू माउंटेन से प्यार करने लग जाओगे, तो जैसे मैंने बताया कि जब पेटीएम मुझे कितने भी पैसे दे रहा था, बट वो प्रेम वैल्यू माउंटेन से हो गया था, तो वो डिसीजन लेना चाहे मुश्किल था, बट आई क्लियरली टू का डिसीजन कि अगर मैंने ये वैल्यू माउंटेन नहीं लिया तो कोई कल को कोई और आके ले लेगा.
एंड आई डोंट वांट कि मरने से पहले ये वैल्यू माउंटेन के लिए मैं ट्राई ना करूं। अब जब आप ये करते हो तो फिर जैसे वो अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी तो आपको वही दिखना चाहिए। अब उसके लिए आपको सहना बहुत पड़ेगा। वैल्यू माउंटेन जरूर मेरे को अभी दिखाई दिया, बट मैं आपको अपने 10-15 साल के थपेड़े थोड़े से सुनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आई वॉज अ सीए, क्योंकि मेरे फादर की डेथ जब मैं 10th में था एक्सीडेंट में हो गई, तो मेरी मदर बोली, उन दिनों प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते थे आपके KIET टाइप के, उन दिनों सिर्फ वो एक दिल्ली में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था और एक IIT दिल्ली होता था। मेरी मम्मी बोली अगर दोनों में एडमिशन नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी, फादर की तरह डेथ हुई है, मेरे ब्रदर और फादर की डेथ हुई थी। इसी सेट सीए कर ले, फादर सीए थे, सीए करेगा तो अपना ऑफिस भी चल जाएगा वर्स्ट केस में, और अगर बात तू अपनी रिसर्च टेक्नोलॉजी की करनी है करता रही हो। तो आई ऑल्सो थॉट, एंड ये प्री इंटरनेट डेज है, प्री इंटरनेट में सोच रहा था मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तो मैं ऐसे ही करता था, 10 महीने में कंप्यूटर साइंस पढ़ता था, 2 महीने सीए की पढ़ाई करता था, तो दोनों हो गए साथ में। तो आई रोट इंडिया फर्स्ट बुक ऑन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इन 2003, एंड मैं 2003 में ही मैंने अपनी स्टार्टअप खोली। अब मजा क्या हुआ, मेरे एक एक फैमिली फ्रेंड थे लॉयर, उन्होंने एक दिन खूब धुलाई करी मेरी। अभी आप सबको इस धुलाई से निकलना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर बनना है तो। कह रहे हैं तुम्हारी मम्मी ने इतने साल बड़ी मुश्किल से पापा का सीए ऑफिस बचाया, तुमने सीए भी कंप्लीट कर ली, और अब तुम ये क्या बैठ के मोबाइल गेम बना रहे हो? ये मोबाइल गेम क्या है? स्नेक जैसे, स्नेक आता था उन दिनों गेम, बोले स्नेक जैसे गेमों से कैसे पैसे कमाओगे, बेवकूफ हो तुम, बंद करो ये काम। तो खैर मैंने बंद नहीं किया, फॉर्चुनेटली मेरी मदर भी थोड़ी साथ थी, मैंने उनसे पूछा, बोली नहीं क्या जरूरत है, जो तू करना चाहता है करता रहा। अब वो हुआ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरी शादी हुई। तो शादी होने से पहले अरेंज मैरिज थी, तो सारे होने वाले ससुर जी पूछा करते थे बेटे क्या काम करते हो, कितना कमाते हो। तो यहाँ हमारे देश में, मैं चाहे लड़कियां भी सुन रही है मैं क्लियर करूंगा, हम सोचते हैं लड़कियों के साथ ही शोषण होता है, पर हर लड़का जो एंटरप्रेन्योर है उसके साथ जरूर शोषण ये होता है कि उसके होने वाले जो ससुर जी अरेंज मैरिज में देखने आते हैं वो पूछते हैं बेटे कितने कितने कितना पैसे कमाते हो, व्हाट इज योर इनकम, ये हर आदमी पूछता है। तो आजकल चाहे आप किसी से खाना बनाने का नहीं पूछ सकते, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना कमाते हो ये तो आज भी बताना पड़ता है। तो वो मैं लोगों को बताता था जी मैंने बुक लिखी है, मैं ये हाईटेक काम कर रहा हूँ मोबाइल ऐप्स। और वो जो होने वाले ससुर जी होते थे वो कई बार रिप्लाई ही नहीं करते थे, मतलब वो देख के चले जाते थे, आते नहीं थे। तो कई बार ये पता चलता था वो बीच में जो पंडित जी होते थे कि वो जी उनको लग रहा है कि लड़का कुछ खास इतना कमाता तो है नहीं, तो आपको उससे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस टाइप की फैमिली में था वहां पर अगर 4-5 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा होता था तो वो लगता था कुछ नहीं कमा रहा। अब वो अनफॉर्चुनेटली एज एन एंटरप्रेन्योर आप 50,000 लाख कमा रहे हो, तो वो कुछ लगता नहीं था उन दिनों लोगों को। तो आपको उससे निकलना पड़ेगा, और ये हर एक को अपने लेवल पे होता है, छोटा बड़ा होगा। फिर जब मेरी शादी हुई, फॉर्चुनेटली मेरे जो रियल ससुर जी बने उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, एंड शादी हो गई। अब शादी होने के बाद वन डे ही सेड, सौरभ जी आपका इतना अच्छा ऑफिस है, तो आई हैड ऑफिस ऑफ 3,000 स्क्वायर फीट, बट आपने 5 ही आदमी क्यों रखे हुए हैं अपने ऑफिस में, आप 50 आदमी क्यों नहीं रखते? तो मैंने कहा जी 50 आदमी इसलिए नहीं रखता क्योंकि अभी 50 आदमी का काम ही नहीं है। बट ये सेट 50 आदमी रखोगे तो ज़्यादा कमाओगे, आप इतने इंटेलिजेंट भी हो, आपके पास ऑफिस भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। बट मैंने कहा ये IT का काम है, इट्स नॉट, जब तक प्रोडक्ट नहीं चलता जब तक मैं 50 आदमी का क्या करूंगा। तो वो बोले आप कॉल सेंटर टाइप का काम कर लो, पर मैंने कहा मेरे को कॉल सेंटर करना ही नहीं, मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। तो ही रियलाइज, ही सेड ठीक है। तो ही टोल्ड, ही सेड, एंड ही टोल्ड माय वाइफ आल्सो, ही सेड ये सौरभ जी लंबी रेस के घोड़े हैं, ये कुछ लंबा सोच रहे हैं, तो होएगा कुछ फायदा। चलो ही वाज हैप्पी कि चलो ठीक है। अब वन डे मेरा एक दोस्त था, ही वाज AVP इन HDFC बैंक, वो फेसबुक पे रिजॉर्ट्स में बहुत जाता था प्री कोविड। तो मेरी वाइफ रोज देखा करती, तो शी सेड ये बढ़िया है, तुम्हारा दोस्त क्लासमेट था, AVP बना हुआ है HDFC का, रोज देखो घूमता फिरता रहता है, तुम काम भी इससे ज्यादा करते हो, पैसे भी कम कमाते हो, तो ये भी सहना पड़ता है आपको। तो मैंने उसको एक ही चीज बताई, मैंने कहा नारायण मूर्ति के ससुर ने, एक दिन मैंने ये पढ़ा था इंटरव्यू, नारायण मूर्ति बोले कि अगर मैं पैसे के लिए काम करता ना तो मैं जॉब करता, आई वुड नॉट हैव बिकम एंटरप्रेन्योर, बिकॉज उनके ससुर ने एक दिन पूछा कि सुधा जो पैसे कमाती है, सुधा उनकी वाइफ, उससे घर चलता है, मैंने एक IITN से शादी करी अपनी बेटी की, और मेरी बेटी के खर्चे से घर चलता है। वो IITN, मतलब निकम्मा वर्ड यूज नहीं था, बट वो एट द एंड ऑफ द डे उनकी थॉट वही था उस इंटरव्यू में, जो उन्होंने बताया कि वो ससुर जी कह रहे हैं ऐसे निकम्मे जमाई का फायदा क्या है। और आज से 40 साल पहले आप सोचो, अगर मतलब ये मेल होने के नुकसान भी होते हैं इस देश में, कि अगर आप मेल होके कमा नहीं रहे और आपकी वाइफ कमा रही है तो कितना सुनना पड़ता होगा। तो वो सारी चीजें आपको सुननी पड़ेंगी। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, एज अ मेल तो मैंने तो खूब सहा ही है, फीमेल्स भी सहती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं सहती, उनको अलग सहना पड़ता है, क्योंकि उनको कहते हैं शादी कर देंगे ये हो जाएगा, वो सब सहना पड़ता है। तो आपको ये सब सहना पड़ेगा, और वन डे
कुछ अच्छा होएगा, आपकी स्टार्टअप चलनी शुरू होएगी, लोग आपको फंडिंग करेंगे, जिस दिन आपको मीडिया कवरेज मिल जाएगी। तो अब क्या हुआ, जब हमारी फंड टू डू लैब की मीडिया कवरेज हुई तो हमारा सामने जो चाय वाला चाय देता था वो पियोन के पास आया, कह रहा सर ने बहुत बड़ी कंपनी खोल ली। चाय वाला बोला क्या तेरे को कैसे पता, सर ने तो अभी पेटीएम छोड़ी है, बड़ी कंपनी कहाँ खोली। कह रहा है वो सर की कंपनी है ना, वो जो तुम्हारा बोर्ड लगा हुआ है फंड टू डू लैब्स का, ये तो कवरेज हुई है, ये मैंने अभी ऐप पे देखी, मैं ऐप पे न्यूज देखता हूँ, उस पर तुम्हारी कंपनी का मैंने नाम देखा। तो अब आप ये देखो कि यू विल अराइव, बट एक बिस्टोन का एक लाइन थी जो ट्विटर के फाउंडर हैं, यू विल हैव टू वर्क 10 हार्ड years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। तो 10 साल तक लोग आपकी धुलाई करेंगे, फिर एक दिन आपको लोग कहेंगे तू बहुत होशियार है। तो ये आपको ऐसे ही होगा आपके जीवन में एज एन एंटरप्रेन्योर। Fantastic answer once again. So Saurabh, actually it's very, very great. I'm feeling very proud to have this conversation with all of you because I'm getting so much knowledge. And the quote that you mentioned in the end, it also reminded me of a quote from a footballer, that is Lionel Messi, everyone must know, one of the greatest players ever to play. And he also said this, once a reporter asked him, yeah, everyone calls you an overnight success. So how does it feel to be an overnight success? So he replied, and I quote, he said, it took me 16 years and a number of days, 200 something days, to become an overnight success. That is something that I sort of relate with what you said, and it makes sense especially in context of successful people. Thank you for your answer. Now I'd like to ask Mr. Sandeep Jain the same question. First of all, I would like to add was what Saurabh said. It makes perfect sense, guys. It's not a 2020 game, the entrepreneurship, and you have to be there for a long time. It's like a test match, and you need to play it like a 2020 match, right? You need to be active all the time. You need to keep working on every ball, right? So that's how the entrepreneurship is. Talking about growth of Geeks for Geeks, uh, see, when we start the Geeksforgeeks company, we are a bootstrapped company. We never took any investment, and the fortunate thing for me was I was working part time for 5.5 years when I was teaching in a college, right? So I was working after 5 o'clock, working on Saturday Sunday. So by the time I left my teaching job, we were already making good money, right? So it was not hard for me to leave that job and then start Geeksforgeeks full time. The toughest decision that I took in my life was leaving that software job. The D-Show job was really high-paying job. There are other perks also that you get in these companies. But when I joined an Indian company as a teacher, you don't get those perks. My salary went down, and at that time, Geeks was not making any money. In fact, there were no ads also. So I was paying from my pocket. I was getting lesser salary from this teaching job, and out of this teaching salary, I was paying for the server cost. We were paying around 5,000 rupees per month for the servers. So that was the toughest decision I ever took in my life, and that paid really, really well for me. Uh, Thank you, Mr. Sandeep. And one more thing that I'd like to insinuate here is that two of our speakers have mentioned this thing in this answer so far, and I am sure Sachin sir will also mention the same thing, which is at one point of time, if you want to become an entrepreneur, you have to keep the money aspect aside and you have to hustle, right? Two of the speakers have already mentioned this, so I'd like to make note of this thing for all the budding entrepreneurs in the audience. There will be a stage in your life and you will have to keep the money factor aside, right? These people have left their 7-figure, 6-figure salaries to pursue a dream or a vision that they had for the future, and it has worked out well for them, and so will be the case with you as well. We hope. Thank you for your answer, Mr. Now I'd like to ask the same question to Mr. Sachin. Thank you, Harshit. I have a very different perspective altogether on this. If you really want to make the entire company a very sustainable for the longer run or a growing company, like one thing I want to make it, you become the unicorn like in 5 years. That is the fastest unicorn ever in the healthcare IT space in India. The one thing is that is like super important. I always talk like in any of the interview is your core values. It's nothing it's all like team. What core values your team and you are following. And we have a very first core value, I definitely talk about other core value as well. It's like whether you are making your customer superhero or not. Like if you are making your customer superhero, you are going to make money, you are going to make your growth, you are going to be like 2x, 3x, or 100x in general.
the one thing like why basically we are growing is still 100% year on year, even after the kind of $1.3 billion valuation, we are going to be at $3 billion valuation by the end of this year. It's like our customers are super happy. They are our champions. We are not doing our marketing. They are doing our marketing. So it's more or less, it's super important. Even like if I talk about in very early days when we sign very first healthcare customer, if we are talking about money, actually we signed the project around 20% of the value of the overall 100% value. So what I'm trying to say is $1 million ka deal tha wo, and we signed in like $200,000 just in that phase. And it's more like, at that time we were in the Noida office, like in a basement, and like few of us like in the US, we were just spend the time even doing a very small implementation and just celebrating as a team. Just make it, even like paratha kha ke bhi party ho rahi thi. And even today, if we are winning anything, it's more like as a team. So I just want to quote this more like this, if you really want to make a sustainable growth, if you really want to make a long-term company, I think the one thing, like we talked about Vijay Shekhar Sharma, we talked about like other peer groups. Like one thing is like always important whether what kind of a resources you have like for a longer run, who actually believe in your vision, who actually believe in your dream, and you also understand their vision. Like whenever like I and Abhinav is basically a CEO, like discussion, it's more like even today, even like 7 years back, yeah, this is something we need to get it done. Like if we really want to be scale, how basically we are proving our customer superhero. So our customers are going to be like always our priority, and that is like one thing what I like strongly recommend to all the entrepreneurs. You are going to make business your 10x, 50x, 100x if your customers are happy in the enterprise business play. Thank you so much, Mr. Sachin. Thank you so much, Mr. Sachin, for this wonderful answer. And he really mentioned one thing that stuck with me in this answer, the fact that he had mentioned that even after making a lot of money, you celebrate the small things, which is an achievement, maybe getting a client on board. And you celebrate you have to find happiness in the littlest of things, like having pranthas with your teammate, for example, right? So thank Yeah, you. वो culture ही होता है. मतलब even if today like the happiest thing for me, I am here. The ESL culture is still continue. Even I left like 5 years back. I started this venture. That culture basically I said even I and you never met. Like in journal in this company, I founded like a very first day. I still remember the challenge even for ESL what we faced. But the culture basically what we set like is still continue. And that is the kind of a happiness your generations are going to take. Maybe you do like multiple. Yeah, that is correct. Thank you, sir, for your answer. Now, I'd like to move on to the third part of our conversation. And I'm seeing in my PC that we have time on our side. So I don't think it will be a problem. So the third topic that we're going to cover today is the key challenges for scale ups. Right? So far we've talked about how to grow, but we haven't discussed the challenges. I mean, Mr. Saurabh Jain mentioned his challenges in his presented answer, but we haven't heard the challenges from Mr. Sandeep and Mr. Sachin, especially. What are the challenges that you guys faced? So I'd like to start with Mr. Sandeep Jain this time, as to what were the challenges that you faced when you graduated from, let's say, IIT Roorkee, your experience as a BTech student in AKTU, having no placement, and then starting Geeks4Geeks and scaling it to the scale that it is at today. So guys, the first challenge I already told you, we were not making any money for initial 4 or 5 years, and I was just working on this idea. I was just adding the content, and humanity works in great ways. There were many contributors who started contributing even without a single penny. We have started paying to the students now. We started long back, but at that time when we started, there were many great contributors who were writing without any single penny. So the thing about us is we are a bootstrap company. So the biggest challenge as a bootstrap company that you face is the cash flow thing, right? You need to ensure that you have enough cash flow, and there are studies which say that most of the companies that fail due to cash flow, right? So cash flow is the biggest challenge. You need to ensure that you have enough cash. There are Sir, problems like I'm so sorry to interrupt you in the middle, but I think your voice is a little bit low. yes, I'll keep the mic closer. So Yeah. the biggest problem that you face is the cash flow thing as a startup, especially us. We were a bootstrap company,
So cash flow is the biggest problem. You need to ensure that you have enough cash. There are all kind of surprises that come. For example, COVID was a surprise for everybody. Things were moving really fast for everybody, but suddenly COVID came. So this is one example of challenge. And when I started, I was doing it for part time, guys, and I was teaching in an engineering college, and there was no employee with these projects at that time. So I'll give you an example. What happened one day, I was using these managed DNS services. We were using an Indian company, and that was managing all these servers for us. So what happened one day? Somebody hacked DNS of Geeks. And Geeksforgeeks was popular, although we were not making money, we were not having employees, but it was popular. So I started getting many emails. I was in college, I was teaching, and I started getting many emails that the site is down. And there was some social media updates also about Geeksforgeeks, that it went bankrupt, and somebody was saying that they were not charging anything, so it's now not getting any money. So it was down, and then I started getting many calls, started getting many emails. And so what I did was I immediately took leave from the college. I went home, and I started calling those guys. We were using all their services. I did not know like how the servers are managed and how those things were working. I was just putting the content, and those guys were providing the services. And suddenly everything went down, and they stopped picking my call, and they were saying, it's DNS, its propagation is going to take time, but it was not going up for many hours. So I kind of get an idea that they are not going to respond. And so what I did that day, I moved everything to Amazon Web Services. And guys, Amazon was new at that time. I worked whole day to learn how to move web servers, and I worked continuously for 2 3 days to learn everything. I moved emails also to Google email. So as an entrepreneur, you always have to be ready. If you are growing the company, I would say don't involve yourself in day-to-day activity. Keep yourself free, so that if surprises come, you can take those challenges. And even if the company goes bigger, even then you don't have to involve in the work yourself. You just have to manage things, and make sure that you have time for the surprises, you have enough money for the surprises. Thank you, sir, for this answer. And once again, I have this habit of pointing out the best part that I found in anyone's answer, so I'll continue it again. And the answer that this answer, the main highlight for me was the fact that Mr. Sandeep took out time from his professional life to, you know, assist in learning new technologies that can help move his venture from the old server to the Amazon Web Service. So this is something that was a highlight for the answer for me, that you have to put in the work. Once again, guys, you have to put in the work, and you have to be ready to learn new things in a short amount of time, and you have to have that spark inside of yourself to do these things if in order to become a successful entrepreneur one day. Thank you, Mr. Sandeep. Now I'd like to ask Mr. Saurabh Jain the same question. I can't see his face. Is there a हाँ technical issue? नहीं Okay, I can see now. sorry. So see, for the challenges, obviously I've already shared. So in growth, I would say the things you have to take care is that you have to have a very clear vision where you want to go. So once you have a clear vision where you want to go, you can so there is this saying that if you don't know where you want to go, any road will lead you there. तो आई थिंक जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको किधर जाना है, वो है तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स के साथ जो मैंने देखा है, एंड आई थिंक मैं भी थोड़ा सा था उस पॉइंट पे, कि एक तो हम अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम कई बार किसी मेंटर को नहीं लेते. तो मेरे केस में क्या था कि देयर इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन कॉल आलोक मित्तल, बहुत monster.com जो है वो उन्हीं से लेके उनकी कंपनी को खरीद के monster.com इंडिया में ऑपरेशंस उन्होंने स्टार्ट किए. ही वॉज अ वेरी बिग पर्सन. तो इन्होंने मेरे को कहा आई वांट टू मेंटर यू. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आलोक जी आप क्या मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनोगे? नहीं. आप क्या मेरी कंपनी में पैसे लगाओगे? ये 2004 या 5 की बात होगी. तो ही सेड नहीं, अभी नहीं लगाना चाहूँगा, बाद में देख लूँगा. तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ना तो ये पैसे लगा रहे ना डायरेक्टर बन रहे, तो वो बोले मेरे को मैं मेंटर बन सकता हूँ, वुड यू गिव मी सम इक्विटी? तो मुझे लगा, मैंने कहा मैं इनको इक्विटी दे किस चीज़ की रहा हूँ, समझ नहीं आ रही. अब कर दी बेवकूफ़ी जो करनी थी, इक्विटी दी नहीं. अब क्या हुआ, उन्होंने 1 डेढ़ घंटे की मीटिंग में मुझे कुछ ज्ञान दिए थे.
अब वो ज्ञान क्या हुआ, साल भर के बाद मुझे ये क्लैरिटी हुई, अरे तो बिल्कुल ऐसा था जैसे भगवान कृष्ण बता रहे थे, इन्होंने जो 1 घंटे में बताया वही वही सब मेरे साथ एक पूरे साल वही वही होता रहा। एंड आई रियलाइज मैंने अब तो बेवकूफ़ी कर दी आलोक को उस समय, मतलब उनको मैंने कहा नहीं कुछ आने के लिए मेंटर। तो अब एक दिन मैं वो महाभारत देख रहा था, तो उसमें वो है ना वो सीन जहाँ पर वो दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण जी और सेना के बीच में चूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल वही बेवकूफ़ी करी जो दुर्योधन ने करी, क्योंकि मैंने आलोक को नहीं चूज किया, मैंने आलोक के पैसे या आलोक के नाम को चूज कर रहा था, आलोक मित्तल नहीं चाहिए थे। तो ये अब 2004-5 में, मतलब आई वाज अराउंड 24। तो उस समय आप यंग होते हो, आपको लगता है मैं ही सबसे होशियार हूँ। मैं एक और लड़के का एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा कॉलेज वाले एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ यंग वाले, बिकॉज वो बड़ा आसान है। मैं कहूँ 100 करोड़ के लिए ऐसे करना है, 200 करोड़ के लिए स्केल के लिए ऐसे करना है, आई थिंक वो आपके लिए अभी चैलेंजेस नहीं है। अभी आपके लिए वो चैलेंज पहले वाला वो है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, मुझे कोई मेंटर मिल जाए, मुझे हल्की सी फंडिंग मिल जाए। तो अब एक लड़का मेरे को मिला, ही हैड अ सोशल नेटवर्क इन अ कॉलेज, 1000 लोग आ गए थे उसके सोशल नेटवर्क पे। तो अब उससे बात हुई, कह रहा है सर इंडिया का जकरबर्ग तो मैं ही बनने वाला हूँ, ये 2011-10 की बात है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैंने कहा मैं तेरे साथ आ जाता हूँ एज अ मेंटर, 10-15% इक्विटी दे दे, बाकी पैसे मैं लगाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा। नहीं सर मैं बनने वाला हूँ जकरबर्ग, 10-15% में आपको इक्विटी सिर्फ इतने पैसे के लिए दे दूँ, नहीं इससे ज़्यादा। मैंने कहा मेरा बजट नहीं है। चलो बात खत्म हो गई। आई मेट हिम आफ्टर 1 ईयर। मैंने कहा आप कितने फॉलोअर हो गए तेरे सोशल नेटवर्क के? तो ही सेड सर मेरी साइट तो बीच में बंद हो गई थी, दोबारा खोली है, 500,000 यूज़र हैं। तो मैंने कहा पिछले साल भी 500,000 ही थे। हाँ सर वो बंद हो गई थी। मैंने कहा बंद क्यों हो गई साइट? सर वो डोमेन रिन्यू करने के पैसे नहीं थे। तो मेरा दोस्त एक मेरे साथ खड़ा हुआ था, ही सेड यार पिछले साल तो ये इतने नखरे कर रहा था, अब इसके बाद डोमेन रिन्यू करने के पैसे नहीं है, डोमेन 500-700 रुपये में रिन्यू हो जाता है, और इसकी 1000 आदमी की साइट इसने बंद करवा दी, जो 1000 से अब 10,000 होती अगर, तो लगता है ना कुछ वैल्यू है। तो व्हाट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इज, देखिए ग्रोथ से पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है और रास्ते में मेरे पास क्या चैलेंजेस हैं। अगर मुझे बॉम्बे जाना है और मैं पैदल जाने की सोच रहा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। वो आप एक दिन में बॉम्बे पैदल नहीं जा सकते। तो पॉइंट ये है कि दिल्ली से अगर आप जा रहे हो, मैं एग्जांपल में आई एम बेस्ड इन दिल्ली, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कितना लंबा जाना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना, अगर मेरे को सैन फ्रांसिस्को जाना है तो एरोप्लेन में ही जा सकता हूँ, मैं सैन फ्रांसिस्को कार में नहीं जा सकता। बॉम्बे हो सकता है मैं कार में चला जाऊं, बट ऑब्वियसली एरोप्लेन इज बेटर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा लाइफ में टारगेट क्या है, और उस टारगेट के लिए व्हाट ऑल आई नीड। और अकेले आप नहीं कर सकते। और एक चीज और आपको ग्रोथ के लिए चाहिए होगी, आपको आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों पता होनी चाहिए। तो विजय शेखर शर्मा इसलिए नहीं सक्सेसफुल है कि वो इंजीनियर है। हिंदुस्तान में इंजीनियरों की कमी नहीं है, 1 करोड़ इंजीनियर है हिंदुस्तान में। मेरी AICT में बात हो रही थी, बोले 15 लाख इंजीनियर हर साल निकलते हैं, जिसमें 90% अनएम्प्लॉयबल है। और जो जो अंदर से गवर्नमेंट को भी पता है कि अनएम्प्लॉयबल है। अब वो जो 10% एम्प्लॉयबल हैं वो भी गिन लोगे तो साल में इतने सारे निकल रहे हैं, 10 लाख 15 लाख से ज्यादा देश में। तो वो विजय शेखर शर्मा ही क्यों सक्सेसफुल है? उसका रीजन मैंने देखा, विजय बड़े गिने चुने इंजीनियर्स में से है जिनके पास हर तरीके की इंटेलिजेंस है। तो देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। वो ये कहती है कि आपको कई तरीके की इंटेलिजेंस होती है, जिसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये काम किसके लिए कर रहा हूँ? इंट्रापर्सनल। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? तो विजय है, नारायण मूर्ति हैं, ये लोग विजय माल्या की तरह क्यों नहीं रहते? ये लोग मुकेश अंबानी की तरह क्यों नहीं रहते? ये लोग इतने डाउन टू अर्थ क्यों हैं? क्योंकि ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, ये लोग कुछ महान काम करने के लिए काम करते हैं। तो आपको जब ये चीजों की क्लैरिटी हो जाती है, एंड व्हेन यू एक और अंडरस्टैंड एज अ इंजीनियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ प्रोग्रामिंग से कुछ नहीं होता। मेरे पास एक प्रोफेसर आए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मिलने, एंड ही सेड, विजय दिखे सामने, ही सेड सर विजय सर अभी भी प्रोग्रामिंग करते हैं? तो मैंने कहा विजय सर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग नहीं करते, विजय सर 10,000 आदमी जो कंपनी में है उन आदमियों की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप ये समझो कि सबसे ज्यादा आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमियों की प्रोग्रामिंग करना हो जाता है। व्हेन योर कंपनी स्केल्स, आई थिंक सचिन वुड टेल की जो फाउंडर है वो यही है, मतलब प्रोग्रामिंग तो करते नहीं होंगे, आई थिंक सचिन वुड आल्सो नॉट बी डूइंग एनी प्रोग्रामिंग एज ऑफ नाउ। बट सीनियर लेवल पे क्या होता है, आपको लोगों को संभालना होता है, 1000 आदमी आपको संभालना है, वो अपने आप में फुल टाइम काम है। आप तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी व्हेन यू विल बी एबल टू ग्रो। तो आपको जब व्हेन यू आर ग्रोइंग, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको धीरे धीरे अपने जो मेन फील्ड है, जैसे अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में से स्पेसिफिक जावा में अच्छे हैं, पर जब आप सीनियर बनोगे तो आप जावा की प्रोग्रामिंग नहीं करते रहोगे। आप इसको मैं एनालिटिकली समझाता हूँ
कि आप हो सकता है आप सैनिक बने, इनिशियली आप लड़ाई करोगे बंदूक के साथ, बट आगे आगे आप सैनिक बन के कर्नल मानेकशॉ बांग्लादेश लिबरेशन में बंदूक लेके नहीं गए थे, वो अपनी अकल लगा रहे थे। तो आपको धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट पे जाना पड़ेगा, उस कॉन्क्रीटनेस से एब्स्ट्रैक्ट चीजों को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मैनेजर बनना पड़ेगा। एंड एज एन इंजीनियर, एज अ प्रोफेशनल, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यू हैव सो मेनी डॉक्टर्स, बट हर आदमी डॉक्टर त्रेहान नहीं बन पाता जो पूरा मैदानता चला पा रहा है। वो ऑन्टरप्रेन्योरशिप, देखिए डॉक्टर त्रेहान ऑन्टरप्रेन्योर भी है, डॉक्टर भी है, हर डॉक्टर ऑन्टरप्रेन्योर नहीं होता। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, एंड व्हेन यू विल ग्रो योरसेल्फ तो आप ग्रोथ कर पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो ग्रो करे नहीं और आपकी कंपनी ग्रो कर गई, ऐसा कभी नहीं होता। वो होगा क्या, आपको निकाल देंगे। स्टीव जॉब्स की कहानी सुनी होगी आपने, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, फिर स्टीव जॉब्स ग्रो हुए, फिर दोबारा एप्पल वाले ने उनको पैर पकड़ के करेगा कि सर आ जाओ, हमारा हम बंद होने वाले हैं, आप आ जाओ। स्टीव जॉब्स आया और वो बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह एक एक कंपनी जो 6 महीने में बंद हो जाती, वो बंद होने की जगह आज वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी हुई है उनके मरने के 10 साल बाद भी। तो आई थिंक आपको खुद ही को बुलंद इतना करने पड़ेगा कि खुदा आपसे पूछे कि तेरी रजा क्या है, वो बिल्कुल वही चीज करनी पड़ेगी। और अगर आप सोचोगे कि मैंने सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई कर ली और उससे काम चल जाएगा, आई थिंक नहीं होता। आपको बहुत सारी वॉलंटियरिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों के साथ मेंटरिंग लेनी पड़ेगी, तभी आपके अंदर वो ज्ञान आएगा जिस ज्ञान के साथ फिर आप जीतोगे। वो हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए, वो कृष्ण चाहे बुक हो, चाहे वो कृष्ण एक्चुअल रियल लाइफ का कृष्ण हो। Thank you, Mr. Saurabh, for such an amazing and well-explained answer. Now, I'd like to ask the same question to Mr. Sachin. So I think like Saurabh and Sandeep already talked about so many great things, and I just want to add like few things over the top. So like especially if I talk about if you are making product company or any other company, your credibility is like one of the major challenge in the initial phase. You know, no one going to trust on you. Like in your initial phase, like even be it like customer or be it even if you really want to hire a good employee, and that is like one of the challenge. Like even when I hired like one or two IITians like in my initial phase in the basement, and when they joined on a very first day, they entered to like a very small office, and like one of them like is still with us as a, one of the founding team member. Actually, it's tough to gain that kind of a credibility even for employee. You know, if you really want to hire like top tier one talent or like 1% talent in India, especially in the initial phase, it's like really difficult how basically you are gaining that kind of a credibility on your idea. That is like one of the initial challenge, and definitely the same challenge is with your customers. You know, if you're going with your competition and your competitor is actually in the same market maybe from 10 years, and especially I'm talking about the enterprise product or companies, not more about, you know, consumer facing. It's more like if you're going in a product company, it's more like a lot of experienced company definitely have like really great credibility in terms of multiple regions, where, you know, if you're going to a startup, like when I attend my very first conference in Vegas, and I actually met with one of my competitor marketing person, and actually his experience in the healthcare industry is more than my age. So it's more or less, you know, like how basically you are gaining that kind of a credibility, how basically you are making that image with the help of your entire team. That is like one of the major challenge what every startup generally face in the initial phase. And definitely to tackle this challenge, it's more or less whether your vision is very clear. I know I am repeating my statement, but again, the answer is very same. You know, whether you have the very clear vision, what people believes in you, like even your customer believes in you, your employee believes in you. Second challenge definitely to take like some tough decisions in life, and I'm talking about a very practical challenge. When we started a company, like in the initial phase, हम लोगों का revenue था around $3 million, and then basically in 2015 we started healthcare business, and we closed just a $1 million deal, and that's where we actually, you know, got to know यार healthcare is a very very big space. But उस टाइम पे ये डिसीजन लेना बहुत टफ था कि whether we really want to continue with healthcare space or with everything what we started, like a 3 million kind of a business. एंड उस टाइम पे हम लोगों ने 70% रेवेन्यू ऑन टेबल छोड़ दिया जस्ट टू फोकस लाइक ऑन सिंगल वन वर्टिकल एंड हाउ बेसिकली टू मेक इट लाइक रियली बिग. So it's like really important, you know, in the initial phase of the startup, how basically you are taking some of the tough decisions in your life forever. It's very very important
यू नो लाइक उस टाइम पे शायद अगर हम लोग सब कुछ कर रहे होते, आज मोस्ट लाइकली हम लोग लाइक इन 5 years में इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते जहां पे बेसिकली हैं हम लोग, मे बी लाइक 1/10 भी नहीं पहुंच पाते. But that was the decision actually when we started just focusing on healthcare and how basically we become the number one company in the entire healthcare space. वो बेसिकली उस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. सो लाइक दो चीजें मेन है. इट्स मोर लाइक हाउ बेसिकली यू आर एक्चुअली गेनिंग द क्रेडिबिलिटी इन द इनिशियल फेज विद योर विजन एंड द ओवरऑल योर टीम, एंड सेकंड डेफिनेटली अराउंड whether you are actually ready to take some of the tough decisions in your life. Thank you so much, sir. I think all these answers have made a lot of sense. This discussion overall has been a fantastic one so far. Now I'll not take much time because we have already ended. We are already done with the nitty-gritty of entrepreneurship. I just have one question, which is a fun question, and that is it. It's an informal one, so you can feel free to answer it in any way you like. So the question is that often recruiters ask the prospective employees that where do they see themselves in 5 years or 10 years down the line. So I would like to take this opportunity to ask each one of you, where do you see yourself in 10 years? And where do you see your venture in 10 years? So I'd like to start with Mr. Saurabh Jain. See, I am very clear. Fun to Do Labs is a long-term venture, and at least we will be at around $100 million of revenue at least in next 10 years. And I think that either we will be a unicorn or we will be like we will be listed on NSE. Most probably we will be listed on NSE and having a market cap above 1,000 crores at least in next 10 years. We believe that we can reach easily $2-3 billion in valuation in next 10 years. But I am a little conservative here. The other thing is that Startup Learn is a blog which I have started, startuplearn.org. So I believe that it will form into a community, and one day it will be a partner to most e-cells and all. And I have this vision which even Vijay used to say when I was in Paytm कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जब आपके entrepreneurship के सारे resources सारी local languages में available हों. So we have very big focus on English. I think पेटीएम में मेरे को एक चीज बड़ी खास लगती थी, आपको चाहे अच्छी लगे बुरी लगे कंपनी, पर पेटीएम में ना एक कल्चर थी कि आप जो भाषा बोलना चाहो बोलो. वो इंग्लिश बोलने का मेनिया नहीं था कंपनी के अंदर, जो आपने बहुत सारी और कंपनियों में देखा होगा. मैं भी एज अ कंसल्टेंट या एज अ वेंडर बहुत कंपनियों में रहा, वो बड़ा इंग्लिश मेनिया रहता है कंपनीज को. पेटीएम में आप जो बोलना चाहो जो पहनना चाहो पहन सकते थे. तो आई थिंक वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, तो हम तो मैं विजय से जब बातें करा करता था तो एक चीज निकल के आती थी. विजय यूज्ड टू से कि हमारे को एक कल्चर सेट करनी है कि देश में कोई भी आदमी किसी छोटे शहर में है, अपनी भाषा बोलना चाहता है, एंड उसको वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं स्टार्टअप्स के, जो आज आप ऑनलाइन जाके वाई कम्बिनेटर के पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, बट वो आपको हिंदी में नहीं मिलते. तो वो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं. आई थिंक स्टार्टअप लर्न का वो है. और फन टू डू लैब्स आई थिंक एक दिन ऐसा आएगा, मतलब मैं 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा, मैंने जब पेटीएम छोड़ी तो आई हैव अ वेरी क्लियर थिंग इन माय माइंड. कल को मेरा पोता क्या कहेगा, दादाजी आपने जीवन में क्या किया, तो मैं उसको बड़ा क्लियर कहूंगा, देख तेरे पापा पढ़ाई करना नहीं चाहते थे क्योंकि पढ़ाई बोरिंग होती थी, तू पढ़ना चाहता है इन गेम्स के थ्रू, इन कार्टून फिल्म के थ्रू, क्योंकि तेरे को पढ़ाई अच्छी लगती है, ये तेरे दादाजी का कंट्रीब्यूशन है. तो आई थिंक वो चीज मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर है. आई थिंक इस वजह से मैंने फन टू डू लैब्स और स्टार्टअप लर्न छोड़ी है, खोली है. Thank you, Mr. Saurabh, and I am pretty sure that you will get where you want to, because we have already seen this past 1 hour that you are a person that is very determined towards his target and he's ready to give up anything if it means that his target will be acquired. I'm really hopeful and I am sure, certain that you will reach there someday. And we're all rooting for you. Thank you for your answer. Next, I'd like to ask the same question to Sandeep Jain. Where do you see yourself in 10 years? Is Geeks for Geeks going to teach students from Harvard? Uh, let's hope that happens. Let's let this happen for sure. Guys, we are in a tech industry and it's very difficult to talk about 10 years. Things are changing very fast. Before Corona, we did not know like how things will are going to happen in 1 year. But talking about a long-term vision, we are currently in engineering education, right? And we want to grow in every domain. Like every engineering student knows what Geeks for Geeks is. Every engineering student has used Geeks for Geeks once in his life. We want to make this happen in every education domain. That's the plan for sure. Thank you, Mr. Sandeep. And I'm pretty sure that one day you'll get.
Lastly, I'd like to ask the same question to Mr. Sachin. यार 10 साल का मतलब पता नहीं है. इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी सोचा नहीं इतना. बट लाइक वन थिंग इज लाइक वेरी कॉमन. अगर हम लोग 100% ग्रो कर रहे हैं लाइक इन लास्ट 5 years, how basically we can continue this kind of a growth. So it's more or less we really want to become the fastest decagon ever in India in the enterprise business. That is like the very short term goal. Around 2023 we are trying to become the decagon, and it's again like a 2 year journey कि यार unicorn से decagon कैसे जाना है. And then definitely 4 years down the line how basically we are making it more public company in general. So that is like the high level thought process of the company at this point in time. Okay, thank you so much, Mr. Sachin, for your wonderful answer. So I guess that concludes this session. I've asked everything. I'm seeing one or two questions in the chat, guys. Can I ask you if you are comfortable answering the questions from the audience? हाँ, आई थिंक एक आंसर कर देते हैं. यू कैन आस्क. Okay, so I'll just combine all of the questions and just ask you one question. So these questions are the answers for these questions have basically been covered in the conversation anyway that we've had for the past hour. But okay, so the basic jinx of all the things that I'm seeing here on the chat is the people are trying to ask you that how to have the base. The first question that I had, that how to avail the resources basically, and how to have that confidence in yourself that your venture is going to be successful. देखिए, वेंचर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आई थिंक आई मे बी दी बेस्ट पर्सन टू आंसर, बिकॉज मेरे साथ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था व्हेन आई वाज लिविंग सच अ बिग जॉब. तो मेरा बड़ा क्लियर था कि देखो, कोरोना के बाद मरना तो है ही है, तो क्लियर सबको है. मतलब मरते तो पहले भी थे, पर हम साइकोलॉजिकली सोचते थे हम अमर है, फिर एक दिन मौत आ जाती थी. पर अब सबको पता है मौत ने तो आना ही है. तो आप मरने से पहले क्या करना चाहते हो? अगर आप मरने से पहले जॉब करके खुश हो एंड यू आर हैप्पी कि ठीक है मैं साल के 1 करोड़ कमा रहा हूँ, 2 करोड़ कमा रहा हूँ, जॉब में 1 करोड़ आ जाएगा, 2 करोड़ आ जाएगा. पेटीएम में कई लोग खुद से भी ज्यादा भी कमा लेते थे शेयर्स वेयर्स मिला के. तो इट्स नो डाउट कि आप इतने पैसे कमा लोगे. बट मैंने एक ही चीज का हिसाब लगाया है कि जिस दिन मैं मर रहा होगा उस दिन मैं मतलब 100 करोड़ आ चुके होंगे, बट स्टिल आई वुड हैव इन माइंड कि यार वो एक आइडिया था, इच्छा तो थी करने की, इस जन्म में तो हो नहीं पाया, अगले जन्म में करूंगा. या फिर मैं किसी दिन देखूंगा कोई आ गया एंटरप्रेन्योर, उसने कर दिया, और फिर मैं कहूंगा अरे यार आइडिया तो मेरे पास भी था, मैं तो पेटीएम का VP बने रह गया. तो आई थिंक जिस दिन आपको ये समझ आ जाए कि कर्म करना अच्छा लगना शुरू हो जाए, मतलब हर आदमी वो नहीं करता. आई थिंक जैसे सचिन इज इन अनदर यूनिकॉर्न. बहुत यूनिकॉर्न्स में फोकस पैसे पे होता है, ग्रोथ पे होता है, मेरे को अरबपति बनना है उस पे होता है. मैं अपना पर आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसे के लिए जाओगे तो जैसे वो नारायण मूर्ति वाली बात थी कि 1 करोड़ का पैकेज मिलना आसान है और 1 करोड़ की स्टार्टअप खोलनी मुश्किल है. तो पैकेज भी मुश्किल है, बट आई एम सेइंग पैकेज फिर भी एक रास्ता तो है ना, कि अगर मैं ये 10 काम करूंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा. स्टार्टअप में वो रास्ता भी नहीं है. बट एक चीज आपको बड़ी क्लियर है कि अगर मेरे को वो कर्म में ज्यादा मजा आने लगे फल से, तो मेरे को अपने गेम में बड़ा क्लियर था. लास्ट मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग और खैर बुरे इंसिडेंट थे, बट इंटरेस्टिंग इसलिए लगे उन्होंने मेरे को लाइफ में क्लैरिटी दी. लास्ट ईयर जब मोदी जी अनाउंस कर रहे थे लॉकडाउन, उस दिन मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हो गई. 6 महीने के बाद मेरे को डेंगू हो गया. अभी हम कहते हैं दिल्ली में 300 केस हो रहे हैं, बहुत कम है. पूरे दिल्ली में 500 केस हुए थे लास्ट ईयर डेंगू के, उसमें से पता नहीं एक मेरा ही कैसे निकला और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया. अब जब 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मेरी मदर बोली देख, मर तो सकता था, जिंदा होके आ गया अच्छी बात है, पर हॉस्पिटल जाने के बाद अब ये समझ ले कि अगर तेरे को छोड़नी है ना पेटीएम, तो यही टाइम है छोड़ने का. अगर तू सोचेगा मैं 5 साल बाद छोड़ूंगा तो छोड़ नहीं पाऊंगा. तो व्हाट आई रियलाइज वाज कि मैं इस सपने के बगैर रह ही नहीं पा रहा था. और मेरे लिए ये था कि आई एम हैप्पी टू बी फेल. मतलब मैं अगर फेल हो जाता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एट द एंड ऑफ द डे मैं कर्म करके शहीद होना चाहता हूँ. मैं उससे पहले नहीं हारना चाहता. तो इसलिए नहीं कि मैं रणभूमि में गया ही नहीं और इसलिए पहले हार गया. मैं बेटर है कि मैं रणभूमि में गया, जीत गया तो बहुत बढ़िया, जीत गया तो अरबपति बन जाऊंगा, नहीं जीता तो जहाँ हूँ वहां तो रहूंगा ही. 2 साल बाद फिर विजय के पास चला जाऊंगा कि जी मैंने स्टार्टअप खोली थी, नहीं चली, अब एक्सपीरियंस आ गया, एडटेक में कुछ करना है तो मेरे साथ कर लो. तो आई थिंक वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जब आप कर रहे हो तो आप मम्मी की, पापा की, अपनी आप पैसे क्या कमा रहे हो, मेरा पड़ोसी क्या कमा रहा है, मेरा दोस्त क्या कमा रहा है, इन सबको भूल जाओ. मैं सिर्फ इस कर्म में रहना चाहता हूँ. आई एम वेरी फोकस्ड कि यही चीज मेरे को बनानी है लाइफ में. और अगर मैं मर गया इससे पहले तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी.
आई थिंक जब इतनी क्लैरिटी हो जाए ना तो अपनी स्टार्टअप लॉन्च कर लो, बिकॉज उस समय फिर तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। तो मेरी मदर को भी कोविड हो गया और वो फिर हॉस्पिटल चली गई, तो हमारे फैमिली में बड़े हॉस्पिटल जाने की बातें हो रही है पिछले 1 साल से। बट इस बार माई मदर वॉज इन हॉस्पिटल हैविंग कोविड, मुझे एंग्जाइटी कम थी, पिछले साल से भी एंग्जाइटी कम थी। उसका रीजन क्या था? रीजन ये था, आई वॉज रियलाइजिंग, मैंने कहा अगर मेरी मदर को कुछ हो भी जाता है ना और डेथ भी हो जाती है वर्स्ट केस में, फॉर्चुनेटली हुई नहीं, तो आई वुड बी रिलेटिवली पीसफुल इन माई माइंड कि मेरी मदर का एक सपना था कि मैं कुछ लाइफ में बड़ा करूं और मैं आज वो बड़ा कुछ कर पा रहा हूं अपने मर्जी से, तो वो सक्सेसफुल हो गई। और वो उन्होंने बीएड कर रखी थी, तो एजुकेशन का जो कीड़ा आया वो वहीं से आया। तो वो सक्सेसफुल हो गई अपनी लाइफ में। तो इस बार आई वॉज रियली हैप्पी। पिछले साल मैं पैसे ज्यादा कमा रहा था पेटीएम का वीपी होके, और वो हॉस्पिटल में थी, मैं ज्यादा एंग्जाइटी थी मेरे को। इस साल मेरे को कम एंग्जाइटी थी, जबकि हॉस्पिटल बेड भी नहीं मिल पा रहे थे आराम से, फिर भी कम एंग्जाइटी थी जब हॉस्पिटल गई, बिकॉज मेरे को ये था कि वर्स्ट केस में कुछ भी हो जाएगा तो भी आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, हर आदमी को आके जाना तो है ही। तो आई थिंक ये जिस दिन समझ आ जाएगा ना, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। पैसे वैसे सब भूल जाओगे उस दिन, आप एक वो हो जाओगे। मेरे को ना सुसाइड बॉम्बर्स का मैं बहुत फैन हूँ, कि आप सुसाइड बॉम्बर बन गए हो एक एंटरप्रेन्योर बन के, कि ठीक है चाहे कुछ हो जाएगा, मैंने तो ये काम करना ही है, देखी जाएगी उसके बाद। तो आप जिस दिन वो करोगे वो सक्सेसफुल हो जाओगे। 90% है, कर्म अच्छा करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। Thank you for your answer. And this concludes the session, guys. One last thing that I would like to do, all the speakers that we have, can you guys please hit the camera and smile? We're going to take a photo of everyone. And Mr. Sandeep Jain, I cannot see your camera. Can you please? Yes. All of us are here. Okay, all right, I got it. Thank you so much, guys, for being a part of this session. I'm sure it helped all of us gain a lot of perspective on how things work in the entrepreneurship domain, and I'm seeing a lot of celebration and clap reactions in the chat. That means it has been a huge success for the audience as well. So yeah, thank you so much, guys. We appreciate your presence here, and we hope that you all achieve all the dreams that you have had, you have shared with us today, and hopefully all of you end up becoming billionaires one day, so that we can, take pride in the fact that we talk to billionaires one day. Thank you so much for being a part. And Bye. please, if you guys end up leaving the meeting, please don't end the meeting for everyone, because the event will shut down. Okay, thank you guys. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you, Mrs. Saurabh. Thank you.